सर यहाँ से एक बार आई थिंक म्यूटेड ही है सर, माइक म्यूटेड है उसका, माइक म्यूटेड है उसका, माइक म्यूटेड है। अच्छा, उसको कनेक्शन नहीं निकालना है उसको। ठीक है, वी आर गुड, ऑलराइट, ठीक है। हाय पीपल, गुड आफ्टरनून एवरीवन, we'll continue from where we had left off. Today we, इसको लैग है शायद, थोड़ा हो जाएगा, ओके ठीक है। So here we begin. Today we will, earlier we had covered the local and standard time. We had covered the latitude and longitude along with the local and standard time. Today we are going to look at the international date line, okay, and also cover part of the eclipse, and then we'll do as many questions as possible based on this topic, okay. So here we are. Let's try to understand what an international date line means, okay. International date line is the meridian of longitude that occurs at 180 degrees. Okay, we know that the meridian of longitude at 0 degrees is called as the prime meridian. It passes through Greenwich. So the time over there, the local time that happens at 0 degrees is called as Greenwich Mean Time, okay, which we refer to as GMT, right? Now we are saying that, you know, on exactly diagonally opposite, or, you know, opposite to that of the prime meridian, you get the 180 degrees longitude, and the line that occurs at that longitude is called as the international date line, okay. Now this line looks somewhat like this, okay. This is what this line looks like. ये नजर आ रहा है आपको? Right, this is what this line looks like. It is a line that passes through the Pacific. Sorry, there was a technical difficulty. We are back online. So here we are. We were saying that the international date line is that line on crossing of which the date changes by exactly 1 day. Either you cross from east to west, you cross from west to east. The date will change by exactly 1 day. Okay, so you are saying there's a 24-hour difference on either side of the international date line. Okay, to understand what we are trying to say here, let's consider these standard time zones that we had considered yesterday. Okay, these are your standard time zones. And now what we are saying is that, let's say that, or even better, let's go to this part. Okay, this is the international date line. You can see the line, the one that zigzags bang in the middle of the Pacific Ocean. That is the international date line. Okay, so what we are essentially saying is that this is where exactly left of the, where you can see the cursor or the pointer, exactly left of the IDL is where the day begins. Okay, the 24-hour day, the calendar day as we call it, begins over here. Okay, and then as in how, say suppose this is 6 o'clock over here. Okay, we'll say that it is 6 o'clock over here now. That is the time over here. Okay, we say this is 6 o'clock. All right, 6 a.m. over here. Let's say the sunrise happens at 6 a.m. and this place experiences the first sunrise of that first day, okay, of that calendar day. All right, now what happens is that the earth keeps moving from west to east, okay, and because of that, after every 15 degrees rotation or after every hour of rotation, what happens is that now a new place comes under the rays of the sun while this place moves a little forward. Okay, so now
is 7 o'clock over here, whereas some other place will be experiencing 6 o'clock. Okay, that entire time zone will experience 6 o'clock in the morning. All right. Then after an hour later, what is going to happen is that the Earth has turned even more. अभी 15 degrees के बजाय 30 degrees का rotation हो गया है. And उसकी वजह से now what you have experienced over here is that it is 8 o'clock in this particular zone, 7 o'clock in this particular zone now, and this particular zone comes under sunrise. Okay, you're getting how the day progresses entirely throughout. Okay, so we say that the first sunrise usually begins on the left side of the international date line, and from there the day keeps on progressing westwards. Okay, meaning the sunrise keeps on happening westwards, and the day keeps on progressing eastwards. Ideally, the day keeps on advancing in hours towards the east. Okay, because the day keeps rushing forward over there, and finally, the last sunrise within those 24 hours will be experienced by this place, exactly right of the international date line. Okay, do you understand what we are saying? The day begins in this part. Okay, the day will begin over here. This is where the day begins. Okay, the day begins over here and ends over here. Okay, the day ends in that part. I have no clue why this is happening. No, I am connected. Okay, I'll just go ahead. Okay, so the day begins in this part and ends on the other side of the ideal. Okay, so this is how the day progresses throughout, and that is why we say that that is why we can say that this is how we can call. एक second, just give me a moment. Okay, so this is how we can say that the day progresses and 24 hours are complete. Okay, so we say that on the left side of the ideal, the day begins and it ends on the other side. Okay, now when you are on either side of the ideal, okay, and you're say like 10 minutes apart from each other, all right, you're saying, or rather a few degrees apart, say 2, 3, 4, 5 degrees apart. Okay, are you going to experience different times? No, obviously not. Okay, so if a place is experiencing a sunrise over here, we say that you are experiencing sunrise on either side of the ideal. Okay, except now you're on different dates. Okay, if this side of the date is, this is the date. Okay, let's say this is 28th October. Okay, this is 28th October, then this place will actually be on 27th October. Okay, even though the time is exactly the same, you will see that there is an exactly 24-hour difference on either side of the ideal. Immediate locations on either side of the ideal will have a 24-hour difference. Okay, so on crossing the ideal, say suppose a person was on the left side of the ideal, okay, and went over to the right side, he'll experience that he has gone into the earlier day. Okay, he will get to live that day again. He'll gain 24 hours and he will get to live that day again. On the other hand, if somebody crosses over from the US side of the ideal and goes to the Japanese side of the ideal, they'll lose a day. They lose 24 hours, and in fact, they'll never have lived that day at all. Okay, fine, samjha? So this is how this entire thing progresses. All right, ठीक है, चलेगा. Are we good, people? Okay. All right, things to remember about the ideal are so on and so forth. First of all, we had established the ideal. It was a, like everyone just came together and decided that this is going to be an ideal, and we are going to, like, because they realized that, the date changes and all that. So they realized that there is a need to establish some kind of protocol, and it is that need that led to the formation of this, or rather, marking of this ideal. Okay, international dateline. Please remember that the date on crossing the ideal, the date changes by exactly 1 day. It is located in the Pacific Ocean, and the longitude of 180 degrees is where the location of the line is. Okay, the line is imaginary. Obviously, you cannot see this. It's not drawn in water or anything of the sort. But you have to understand that there are countries on either side of the ideal. Okay, so there will be countries on this side, there will be countries on that side. The fun part is the ideal does not remain a constant line. Okay, it is not like you've marked the line like this, so it is going to remain so. The ideal looks zigzag, and the difference between the straight line and the zigzags are because countries choose to be on either side of the ideal. Sometimes a country can choose to be on this side depending on who it is doing business with. It can be for economical, social, cultural reasons why a country chooses to be on either side of the ideal. Okay,
So if the country chooses to be on the left side of the ideal, that is also up to the country's, like, that's also the country's prerogative. It is up to that country's discretion. And if it chooses to be on the other side of the ideal, that also works for the country. And the ideal will change accordingly. Okay. It is not a constant thing. If the country change, see people, now you cannot change a country's location. Okay. See, this is the country's location. Then you change, you people are not being able to view that screen. You are not viewing that screen. Are you? No. Okay, ठीक है, no problem. My question is कि आप देख रहे हैं मैं आपके, अच्छा, lag, no worries, ठीक है. So we are saying that the location of the country cannot be changed, right? You cannot physically pick up a country and put it on the other side of the ideal. It's an imaginary line, for heaven's sake. It is going to, the line is imaginary and it can be drawn to our will. So we just say that, okay, now this country lies on this side of the ideal and that country lies on the other side of the ideal. Okay, you do not change the location of the countries. The countries can simply, make some adjustments to their time and date and say, fine, now we choose to be on this side of the ideal and we are changing over to the other side of the ideal. Okay, that is what happens usually. But it is up to the countries that live close by, closer to the ideal, to be on either side of the ideal. The ideal does not pass through any land. Okay, it will not pass through any piece of land. It passes only entirely through water. And that is a very, how do you say, it's a very logical explanation. Let's say, for example, I'm sitting in a room and let's say that the ideal passes exactly in the middle of this room. Okay, what we are essentially saying is that half of my students are going to be on the 27th of October and the other half are going to be on the 28th of October. Okay, and that doesn't work for anybody, right? It will be a huge confusion for administration or any other purposes. So we cannot have the ideal passing through any piece of land. It will just create, make for more chaos. So we do not have an ideal passing through land. The ideal only ever passes through water. All right, are we good? Clear so far? All right, okay, moving forward. Okay, let's go here. All right, if this is clear, let's go to this part. Okay, what happens when you cross the ideal? Let's say you cross the ideal from the, and I'm not talking of hemispheres now, just mark the direction. All right, let's say we cross the ideal from from east towards the west. Okay, so this is where you're crossing the ideal from. When you say like we cross the ideal from east to west, okay, this is how you've come. All right, you've arrived from east towards the west. Okay, so what will happen? Will you gain 24 hours? Will you lose 24 hours? You lose 24 hours, absolutely. Okay, in this case, when you cross from east towards west, the ideal, what happens is that you lose 24 hours. Okay, and you will have to add a day to your time, because if you were on 27th October, you will add another day to your time and say it is 28th October instead. Okay, okay, fine. And what happens? Okay, then let's get rid of this part and say what happens when you cross over from west to east. You will gain 24 hours, right? If you were actually on 28th, you will go back and go back a day in calendar and say it is now the 27th of October. You get to live that day again. All right. This is called as crossing the ideal. Right. This is a question that usually appears in your UPSC exams, but then they've just asked you this question once and they've never quizzed you over it again. Okay. Once again, there have been countries that have crossed over. Samoa Islands and Tokelau Islands are famous examples. I'll tell you what the reason is for countries to cross over. Let's say there is a country. Okay. Let's say you can see Kiribati over here. Can you make out Kiribati Islands? Yeah. You will take some time. Okay, now you can see Kiribati Islands. So we are saying this is Kiribati Islands. Okay. Now what happens is this is very close to the ideal. Okay, this was where Kiribati was. All right. And now tell me, Kiribati happens to be close. It happens to be kind of midway between New Zealand and USA. Okay, two huge countries that it can trade with. All right. Exports of Kiribati are usually fish and copra and stuff like that. Okay. So we are saying, let's say it is trading with New Zealand currently. New Zealand and Australia happen to be its largest trading partners. Okay. It tries to stay in the same time zone or in the same day as that of New Zealand. I'll tell you what happens. Let's imagine that Kiribati's largest trading partner was New Zealand and
Australia. And what happened is that Kiribati decided to stay on the other side of the IDL. Okay, so we are saying that Kiribati is on 27th October, New Zealand and Australia are on 28th October. Okay, Australia sends over a in like it orders something, let's say a ton of fish or something. Okay, it orders some amount of fish from Kiribati can deliver it quickly. Okay, so we say that Kiribati receives the order, Australia orders on 28th, Kiribati receives the order on 27th. Okay, Kiribati immediately delivers the order on 27th, Australia receives the order on 28th and gives Kiribati money on 27th. Imagine explaining this to an auditor in both Australia and Kiribati. Okay, it becomes difficult. It becomes extremely difficult trying to match the dates. So it makes sense that if a country is trading mostly with it, it is not illegal, but it is just extremely confusing if you start being in different time zones. Okay, so it makes sense that if you are dealing with somebody, if you are trying to have more business with someone, it makes sense to be in the same time zone as them. Okay. That is one very major reason why countries choose to remain on either side of the ideal, okay, for economic reasons. Are we good people? That is all that you will ever be asked about the ideal. There is another thing called as daylight saving. UPSC has never ever quizzed you on that. I don't know if CDS does. I think I might have seen a question sometime in CDS or some other defense exam regarding daylight saving, but UPSC NDA exams have never quizzed you on daylight saving. Okay, so we don't have to worry about daylight saving so much. Yeah, fine. Okay, can you answer this question for me? With reference to international dateline, consider the following statements. A traveler crossing the international dateline from east to west gains a day. He loses a day. So clearly it is wrong. Okay, ideal is an imaginary straight line at 180 degrees meridian. Straight line? No, it's zigzag. Okay, so it's imaginary. It occurs at 180 degrees meridian, but it's not straight. Okay, so both these statements are wrong. Which finally brings us to the last topic of this last subtopic, which is an eclipse. Okay, because we cannot put an eclipse somewhere else. We decided to go with this topic wherever you find the rest of the celestial bodies. Okay, so here we are. We are trying to understand what an eclipse is. Okay, eclipse is somewhat like this. And coincidentally, today is also a lunar eclipse. So I guess we are in luck today. Okay, this is what an eclipse looks like. All right. Eclipse का मतलब होता है, what an eclipse actually means is that a celestial body, an astronomical body, is partially covered. Okay, the visibility is blocked because it passes into the shadow of some other body. Okay, that is what an eclipse is. Okay, वो किसी के shadow में आ जाता है कि या दूसरी body किसी दूसरे body के shadow में अंदर आ जाती है, उसकी वजह से एक astronomical body या एक celestial body दिखना बंद हो जाती है for a particular period of time. ओके, उसको बुलाते हैं इक्लिप्स. ओके, अब इक्लिप्स होने के लिए प्री रिक्विजिट कंडीशंस ये है कि वन फर्स्ट ऑफ ऑल तीन या तीन से ज्यादा बॉडीज जो होती है वो एक स्ट्रेट लाइन में अकर करें. ओके, उस कंडीशन को एस्ट्रोनॉमी में सिजिगी कहते हैं. ओके, सिजिगी मतलब वो कंडीशन जिसमें सी टू बॉडीज विल ऑलवेज बी ऑन इन अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज मैथ फॉर यू. ओके, लेकिन तीन या तीन से ज्यादा बॉडीज अगर एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में अकर करते हैं तो उस इवेंट को एस्ट्रोनॉमी में सिजिगी कहते हैं. ओके, रफली इन अ स्ट्रेट लाइन. अभी दिस इज नॉट जस्ट फॉर द अर्थ, दिस इज नॉट लिमिटेड टू द अर्थ ओनली, ये पूरे यूनिवर्स के लिए अप्लाई करता है, लेकिन हम अर्थ एंड अर्थ से रिलेटेड रेफरेंस में चीजें करते हैं, राइट? सो दैट इज वाई इसको प्रॉपर्ली सिजिकी कहते हैं. यूजुअली हम अर्थ के आसपास हमको क्या मिलता है, एक सन मिलता है, दूसरा मून मिलता है, ये दोनों मेजर बॉडीज होते हैं. सो इन सब ये तीनों जब साथ में एक साथ आ जाते हैं, एक सिंगल लाइन में आ जाते हैं, तो फिर उसको सिजिकी कहते हैं. ओके, अब सिजिकी होने का मतलब ये होता है कि यू कैन हैव टू पोजिशंस ऑफ दिस. मतलब दो सिचुएशंस हो सकती है. आइदर द मून लाइज बिटवीन द सन एंड अर्थ, जैसे यहाँ पर है द मून लाइज बिटवीन द सन एंड अर्थ. ओके, तो ये क्लियरली अभी न्यू मून कंडीशन है ना. दिस इज अ न्यू मून कंडीशन जिसको हम अमावस कहते हैं हिंदी में. ये वो वाला कंडीशन है. ओके, या फिर द अदर कंडीशन कुड बी दिस वेयर द अर्थ लाइज बिटवीन. लेट्स टेक अनदर मोमेंट बिफोर दिस एक्चुअली हैपेंस फॉर यू. दूसरा वाला कंडीशन ये हो सकता है कि अर्थ जो होता है वो सच में ये कंडीशंस हो जाते हैं. सो वी आर सेइंग एसेंशियली कि एज लॉन्ग एज दीज थ्री रिमेन इन वन सिंगल स्ट्रेट लाइन, उस कंडीशन को सिजिगी कहेंगे. एंड
ऐसी कंडीशन पे ही सिर्फ आपको एक्लिप्सिस मिल सकते हैं। ओके, एक्लिप्सिस होने के लिए सिजिगी होना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द सोलर एक्लिप्स। दिस इज गॉन, yours is gone, mine is working. Ah, right, I'm on my hotspot ऐसे। ओके, ठीक है, चलेगा। हाँ, here we are। ओके, बट देन वो जो बच्चे थे वो तो गए। ओ, यू गाइज आर नॉट। ओ, ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम, सॉरी। सो हियर वी आर। ओके, right, so the thing is कि we are trying to see what a solar eclipse is and how that occurs. Okay, ये नजर आ रहा है आपको सामने solar eclipse वाला condition, right? This is what we are looking at. Okay, आपको, oh, sorry, सॉरी। सोलर इक्लिप्स में क्या होता है, एक तरफ सन है, ओके, बीच में एक मून आ गया है, एंड एक तरफ आपका अर्थ है। ओके, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स में व्हाट हैपेंस इज यू हैव द सन ऑन वन साइड, द मून ऑन द अदर साइड, सॉरी द अर्थ ऑन द अदर साइड, एंड अ मून इन द मिडिल ऑफ इट ऑल। ओके, अब मून को भी ठीक से देख लीजिएगा, मून कोई उसके बराबर बीच में नहीं बैठा है। ओके, इट इज नॉट लाइक द मून इज एग्जैक्टली मिडवे ऑफ द सन एंड द अर्थ, ऐसा कुछ नहीं है। यू जस्ट सेइंग कि मून इन, ये जो तीनों तीनों एक लाइन में आ गए हैं, उसमें सन से मून बीच में, एंड बीच में एज इन it happens to lie between the earth and the sun. Okay, distances wise बीच में नहीं है, that is not what we are saying. Okay, distance exactly equal नहीं है उसका, that is because वो हो भी नहीं सकता है। अर्थ बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है यूनिवर्स में एज कम्पेयर टू द सन एंड इट्स ऑर्बिट। ओके, नाउ हियर वी आर। अभी इसको प्रॉपरली देख लीजिएगा, ये मून, ये सन की तरफ, ये मून का जो शैडो होता है वो अर्थ पे जाके गिर रहा है। ओके, आई विल कंटिन्यू रे। अच्छा, okay, ठीक है, no problem. So what happens is the moon actually lies in the shadow of the moon falls on the earth. Okay, now this is the shadow of the moon which is falling on the earth. Pay mind to this. ये जो शैडो है उसके दो पार्ट्स है। ओके, एक वो सबसे गहरा वाला शैडो जो होता है वो बीचों बीच लाई करता है, कोर ऑफ द शैडो, हाँ, विच वी कॉल एज द अम्ब्रा। ओके, एंड साइड में, उसके साइड में अगर आपको यहाँ नजर आता है तो यू विल सी द रेस्ट ऑफ द शैडो। ओके, सी दिस, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, राइट, दैट इज द पेनम्ब्रा पार्ट ऑफ इट। ओके, दिस इज द पेनम्ब्रा पार्ट ऑफ इट, एंड ये जो गोल करके दिया है ना, दैट इज द अम्ब्रा पार्ट ऑफ इट। ओके, तो ये वी आर सेइंग कि वो जो गोल वाला सबसे डार्क वाला शैडो है, उसके वहां पर जो रीजन होता है वो टोटल सोलर एक्लिप्स एक्सपीरियंस करेगा। ओके, ठीक है, एंड जो बाजू वाला पार्ट है जहाँ पे पार्शियल शैडो होता है या पेनम्ब्रा होता है, दैट विल एक्सपीरियंस दी पार्शियल सोलर एक्लिप्स। ओके, ठीक है। सोलर एक्लिप्स मतलब यू आर सिटिंग ऑन द अर्थ, यू आर समवेयर ऑन द अर्थ, एंड आपको सन दिखना बंद हो जाता है। ओके, क्यों? क्योंकि मून बीच में आ गया है, द मून इज बिटवीन यू एंड द सन, एंड you lie within the moon's shadow. The moon's shadow is falling upon the earth, and since you are on the earth, you cannot see the sun. Okay, that is called as an eclipse. वो eclipse है आपके लिए। Now, depending on which region of the moon's shadow you're in, you will experience either a total solar eclipse or a partial solar eclipse. Okay, partial solar eclipse अगर पेनम्ब्रा में लाई करते हैं, टोटल सोलर एक्लिप्स अगर आप उस अम्ब्रा वाली रीजन में रहते हैं। ओके, सो इफ एनीवन लिविंग विद इन दैट अम्ब्रा रीजन जहां पर मून का वो वाला शैडो गिरा है, हार्ड, द कोर वाला शैडो, बीच वाला सबसे डार्केस्ट शैडो जहां पर आता है, वहां पर टोटल सोलर एक्लिप्स होगा। बाकी सारी जगह पे वो जो बाकी का शैडो वाली रीजन है वहां पे पार्शियल सोलर एक्लिप्स होगा। ओके, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। चलेगा, ठीक है। एंड प्लीज रिमेंबर दिस हैज नथिंग टू डू विद द डिस्टेंसेस। ओके, ये वाला डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है। ऑलराइट, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, दिस इज हाउ अ टोटल सोलर एक्लिप्स लुक्स लाइक। ओके, ये बीच में ऐसे आपको टाइम में, अच्छा, दिस इज व्हाट अ टोटल सोलर, हाँ दिख रहा है ना, दिस इज व्हाट अ टोटल सोलर एक्लिप्स लुक्स लाइक। ओके, दिस इज ये वाला जो पार्ट होता है ये थोड़ा सा, ये पूरी तरह से सन को ऑब्सक्योर कर देता है, ब्लॉक कर देता है। ओके, मीनवाइल दिस इज अ पार्शियल सोलर एक्लिप्स जहाँ पे आपको थोड़ा सा सन दिखाई देता है, एंड देन दिस इज एन एन्युलर सोलर एक्लिप्स। ओके, एन्युलर सोलर एक्लिप्स के लिए आपको ये चाहिए कि मून ना शुड बी एट द फारदेस्ट फ्रॉम द अर्थ,
यूजुअली जब मून ऑर्बिट में सबसे दूर होता है अर्थ से, तो तब यूजुअली आपको ये बहुत रेयर कंडीशन होती है एन्युलर सोलर इक्लिप्स की, वो नजर आ जाती है। ओके, दिस इज व्हाट यू यूजुअली सी। सन हमको नॉर्मली कौन से टाइम पे दिखाई देता है? दिन में, है ना? रात में वो दिखता नहीं हमको, राइट? सो वी आर सेइंग दिन में दिखाई देता है। तो अगर उसने दिखाई देना बंद होता है, अगर उसकी विजिबिलिटी ब्लॉक हो रही है, तो वो भी तो दिन में ही होगी। तो ये जो सोलर इक्लिप्स होता है, दैट ऑलवेज हैपेंस ड्यूरिंग द डे अलोन। ओके, वो रात में नहीं दिखता है हमको सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स हैपेंस ड्यूरिंग द डे बिकॉज सन यूजुअली दिन में दिखाई देता है। Okay, so this is also something you need to remember. And also the fact कि solar eclipse usually हर पार्ट में नहीं दिखाई देता है जहां पर मून का शैडो गिर रहा है। wherever the moon's shadow falls, only in that places can you ever see the solar eclipse. Okay, solar eclipse की खासियत ये होती है कि it only lasts for a few minutes, वो बहुत देर के लिए नहीं चलता है। से partial solar eclipse might last for a longer time, total solar eclipse तो बहुत ही कम मिनट्स के लिए लास्ट करता है, like a couple of minutes to a few minutes, 8 7 10 8 10 minutes वगैरह, ऐसे ऐसे this is the time period that we are looking for, as far as solar eclipses are concerned. Okay, solar eclipse की वो famous look at the sun with naked eyes because it will damage the eyes. The proportion of UV rays received is going to damage the eyes. It's not like UV rays extra amount में release हो रहे उस दिन. Just the thing is सब कुछ darken हो जाता है, right, for that moment. तो हमारी ना वो जो you've ever seen हमारे eyelids जो होते हैं ना, वो कुछ ऐसे ऑपरेट करते हैं कि रात जब जब अंधेरा हो जाता है, तो वो अपने आप थोड़ी एक्स्ट्रा लाइट अंदर लेने के लिए बड़े हो जाते हैं। ओके, द ओपनिंग, उसको क्या बुलाते हैं? रेटिना नहीं, अपर्चर बुलाते हैं शायद उसको, जहां से लाइट अंदर जाती है, दैट इंक्रीजेस। हाँ, उसको अपर्चर बुलाते हैं। तो वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, तो वो अपने आप ड्यूरिंग द इक्लिप्स, सेंस अंधेरा हो जाता है, तो वो अपर्चर खुलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एंड उसकी वजह से हम अपने आप ज्यादा लाइट अंदर लेते हैं, विच मीन्स एक्स्ट्रा यूवी लाइट आएगा। उसको रेटिनोपैथी कहते हैं बिकॉज इट कैन डैमेज परमानेंट, टेम्पररी ब्लाइंडनेस हो सकता है, इट कैन नेवर हील अनफॉर्चुनेटली, एंड परमानेंट ब्लाइंडनेस हो जाता है। तो we just remember not to look at the sun during the solar eclipse and partial eclipse, partial solar eclipse. Even like the only way of looking at the sun or viewing the sun or viewing the eclipse is through those glasses, those specially made glasses. Okay, ठीक है। नॉर्मली ये सोलर इक्लिप्स जो होता है वो अलग अलग टाइम पे ऑन दी अर्थ कुछ 2 से 5 बार ड्यूरिंग एंटायर ईयर हो जाता है। ओके, इट डजंट हैपन एट द सेम प्लेस नेसेसरली, अलग अलग जगह पे होते रहता है। एंड you might not experience a total solar eclipse or an annular solar eclipse for multiple months. You say कि normally एक total solar eclipse 18 महीनों की डिस्टेंस पे आ जाता है। ओके, दैट इज यूजुअली हाउ इट हैपेंस। आर वी गुड विद द सोलर इक्लिप्स? ओके, नाउ यू गो ऑन टू द लूनर इक्लिप्स। नॉर्मली मून हमको कब दिखाई देता है? रात में। ओके, ठीक है। एंड एक एंटायर हेमिस्फीयर को दिखाई देता है, ऐसा नहीं कि कुछ कुछ लोगों को दिखाई दे रहा है। वी आर सेइंग कि एन एंटायर हेमिस्फीयर कैन व्यू द। सो वी आर सेइंग कि ये जो लूनर एक्लिप्स होगा वो भी रात में ही होगा। ओके, इट विल आल्सो हैपन ओनली एट नाइट। पोजिशनिंग देख लीजिएगा, दिस इज द पोजिशन इन विच द थ्री शुड बी। सन एक तरफ, मून दूसरी तरफ, बीच में अर्थ। ओके, नाउ दिस इज अ वेरी, अब ये मैनेजेबल है कंडीशन सारे। वी आर सेइंग कि ये सन, अर्थ एंड मून जो होता है, दैट हैव टू बी इन दिस वे कि सन एक तरफ, मून एक तरफ एंड अर्थ। ओके, अर्थ के शैडो में मून लाई कर रहा है। कैन यू सी दिस? अर्थ का जो शैडो है उसके अंदर मून लाई करता है। ओके, अब वो शैडो के भी दो ये है पार्ट्स है। एक वो डार्केस्ट डीपेस्ट शैडो वाला रीजन है जिसको हम अम्ब्रा कहते हैं, एंड देन देयर इज द अदर पार्ट विच वी कॉल एज द पेनम्ब्रा। ओके, दैट इज द पार्शियल शैडो। तो अगर मून, अब ये मून जो है वो रोटेट कर रहा है, राइट, रिवॉल्व कर रहा है, राइट, अर्थ के अराउंड। तो व्हाइल इट इज मूविंग, पहले वो पार्शियल शैडो में से पास करेगा, फिर वो प्रॉपर अम्ब्रा में से पास करेगा, डीपेस्ट डार्केस्ट शैडो में से, देन वापस पार्शियल शैडो में से पास करेगा। ओके, दिस इज हाउ द फेजेस ऑफ द मून लुक लाइक। ये 2022 में कोई लूनर एक्लिप्स हुआ था। अच्छा, ये देखने लायक है। हाँ, ये 2022 में कोई लूनर इक्लिप्स हो गया था। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फेजेस है उस मून के। ओके, सो यू कैन क्लियरली मेक आउट कि द मून इज धीरे धीरे से, हल्के हल्के से पासिंग इनटू द शैडो, पार्शियल शैडो। तो पार्शियल सोलर इक्लिप्स हो रहा है, फिर ज्यादा 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 मून ऑब्सक्योर होते जाता है, तो आपको कम 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 दिखाई देने लगता है मून। फाइनली आपको एक ब्लड मून दिखाई देता है बिकॉज स्पेशल कंडीशन, अर्थ के एंड मून के डिस्टेंसेस इस तरह से एडजस्टेड है कि आपको ब्लड मून दिखाई देगा। ओके, एंड देन उसके बाद दिस इज टोटल लूनर एक्लिप्स। जो बीच में ब्लड मून है वो टोटल लूनर एक्लिप्स है। एंड देन उसके बाद धीरे धीरे वंस अगेन द मून स्टार्ट्स टू
अपीयर रिलेटिव, ओके। तो वापस पार्शियल लूनर एक्लिप्स में चले गए हैं, धीरे 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 ज्यादा मून दिखाई देने लगता है, एंड फाइनली इट पासेस आउट ऑफ द एक्लिप्स, ओके, पासेस आउट ऑफ द शैडो ऑफ द अर्थ, एंड आपको मून पूरा दिखाई देने लगता है, ओके। दिस इज हाउ लूनर एक्लिप्स अकर्स। लूनर एक्लिप्स यूजुअली, सो यू कैन मेक इट आउट फ्रॉम हियर, यू आर सेइंग कि वो जो मून है वो ऑल द वे इस शैडो में से जब तक पास करता है, तो पहले पार्शियल लूनर एक्लिप्स होगा, फिर टोटल, एंड देन वंस अगेन पार्शियल, ओके। सो दिस इज व्हाट यू आर लुकिंग एट, ओके। अब ये जो लूनर एक्लिप्स है ये सिर्फ रात को होगा, ओके। द कंडीशंस हैव टू बी कि सन एक तरफ, मून दूसरी तरफ, एंड बीच में अर्थ होना चाहिए। मून के शैडो में से अर्थ के शैडो में से मून ने गुजरना है, ओके। ये हर न्यू मून पे या फुल मून पे नहीं होते हैं इक्लिप्सेस। वो जो एंगल्स ऑफ इंक्लिनेशन है ना, वो बहुत पक्के होने चाहिए, वो बहुत यूनिक एंड एग्जैक्ट अरेंजमेंट होती है, तब जाकर आपको इक्लिप्सेस हो जाते हैं, ओके, मिल जाते हैं, ऑलराइट। लूनर इक्लिप्स को नेकेड आइज से भी देख सकते हैं, बिंदास आराम से देखो, कोई टेंशन नहीं होता है, यू देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ डैमेज इन योर आइज, ओके। लूनर इक्लिप्सेस सॉरी यूजुअली पूरे हेमिस्फीयर को दिखाई देता है, एक एक पूरे हेमिस्फीयर को दिखाई देता है, राइट। जहां पर रात होगी वहां पर आपको हर तरफ ये लूनर एक्लिप्स दिखाई देता है, विच मीन्स की द एरिया कवर्ड बाय द लूनर एक्लिप्स इज यूजुअली ग्रेटर, ज्यादा एरिया कवर होता है लूनर एक्लिप्स से, ओके। एंड लूनर एक्लिप्स जो होता है वो, सोलर इक्लिप्स कैसे कुछ कुछ मिनट के लिए चलता है, राइट, 8 to 10 minutes और समथिंग, लेकिन लूनर इक्लिप्स यूजुअली गोज ऑन फॉर अबाउट एन आवर और सो, बहुत ज्यादा देर के लिए चलता है लूनर, बिकॉज वो पार्शियल से पास करेगा, फिर टोटल में आ जाएगा, फिर वापस पार्शियल से जाएगा, सो वी से कि इट लास्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ओके। एंड दिस ऑल्सो अकर्स अराउंड 2 to 5 times a year, एंड दैट इज ऑल देयर इज टू eclipses. This is the blood moon. Blood moon का फंडा ये होता है ना कि मून नॉर्मली अर्थ की रिफ्लेक्टेड लाइट पे दिखता है हमको, ओके, ठीक है। अब अगर वो अर्थ के शैडो में चला गया है, तो इट मीन्स कि उसको जितनी भी लाइट आ रही है वो अभी सिर्फ अर्थ के साइड साइड से आ रही है ना, उसके बाजू से आ रही है, वो जितनी भी एजेस से आ रही है अर्थ के एटमॉस्फेयर के, ओके। अभी अर्थ के एटमॉस्फेयर के एजेस से आने वाली जो लाइट होती है उसमें से मोस्टली जो ब्लू लाइट होती है वो तो स्कैटर हो जाएगी, कम वेवलेंथ है, तो ब्लू लाइट विल गेट स्कैटर्ड, ओके। कौन सी लाइट रिफ्लेक्ट होगी, कौन सा कंपोनेंट है लाइट का, रेड है, सो दैट इज व्हाई मून रेड दिखाई देता है। सो वेरी स्पेशल कंडीशंस अंडर विच द ब्लड मून विल अकर, ओके। ठीक है, दिस चैप्टर, ओके। अब ये अपना हो चुका है, सो फार वी हैव कवर्ड द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द यूनिवर्स, बिग बैंग कैसे हुआ, स्टार्स कैसे फॉर्म हुए, प्लैनेट्स कैसे फॉर्म हुए, हमने सन की लाइफ साइकिल स्टडी कर ली, सोलर सिस्टम देख लिया, उसके डिफरेंट डिफरेंट सेलेस्टियल बॉडीज देख लिए, कौन से याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, ड्वार्फ प्लैनेट्स कौन से होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। उसके बाद हमने देखा कि अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट, नहीं, हमने फिर प्लैनेट्स को कंपेयर किया, उनके रोटेशनल स्पीड, स्पिन स्पीड्स जो होते हैं वो, टिल्ट्स वगैरह, ये सारे सब कुछ कंपेयर करके देखे। फिर हमने प्लैनेट्स के यूनिक फीचर्स देखे, उनके जो इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स होते हैं उसको देखा, एंड देन वी मूव्ड ऑन टू दी अर्थ, ओके। अर्थ के सारे फिजिकल एस्पेक्ट्स देखे, टिल्ट है, द एंड उसका सिग्निफिकेंस है, अर्थ का मून, सॉरी, सन का अपेरेंट मूवमेंट देख लिया, जिसकी वजह से द सन इज ओनली ओवरहेड इन द ट्रॉपिक्स एंड बाकी हर तरफ स्लांटिंग लाइट मिलता है, और उसका सिग्निफिकेंस देख लिया कि उसकी वजह से वेरिंग लेंथ्स ऑफ डे एंड नाइट कैसे हो जाते हैं। लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड ऑफ द अर्थ कंसिडर्ड, एंड सो इज लोकल एंड स्टैंडर्ड टाइम। आज हमने आइडियल एंड इक्लिप्स कवर कर लिया है, वी आर डन विद सेलेस्टियल बॉडीज, ओके। देयर इज नथिंग मोर दैट वी कैन डू अबाउट सेलेस्टियल बॉडीज एनी मोर। एक ये क्वेश्चन था यार कहीं तो आइडियल का, वो देख लेते हैं, आंसर कीजिए, देन वी आर गुड। पता नहीं कहीं तो चला गया है वो क्वेश्चन, गिव मी अ मिनट व्हाइल आई लोकेट इट। आप लोग को सर्दी लग रही है क्या? ये वाला बताइए, ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स, दिख रहा है, ये आएगा ना आपको थोड़ी देर में। ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स द अर्थ कम्स इन बिटवीन द सन एंड द मून, या फिर द मून कम्स इन बिटवीन द सन एंड द अर्थ, या फिर मून कम्स एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द अर्थ, और सन कम्स इन बिटवीन अर्थ एंड मून। बीच में नहीं आ सकता, तो कौन किसके बीच में आ गया है? मून अर्थ एंड सन के बीच में आ गया है ना। एंड वो कोई like it is not exactly midway, you're just saying that the moon comes in between the sun and the earth, okay, this is correct. मुझे ना एक, वही तो है,
इसके ऊपर का आंसर आई कांट आई सी इट इज बियॉन्ड मी। इंटरनेशनल डेट लाइन पर से क्वेश्चन है, हाँ ये वाला, दिस इज द क्वेश्चन। कहीं तो मिला था ना अभी। हाँ, व्हाट विल हैपन इफ यू आर फ्लाइंग ईस्ट अक्रॉस द इंटरनेशनल डेट लाइन? ईस्ट डायरेक्शन में अगर जाएंगे आप इंटरनेशनल डेट लाइन के अक्रॉस, तो क्या होगा? You will gain 24 hours. Absolutely correct. Okay. You will gain 24 hours. Good. Which brings us to this. अभी आई होप टू गॉड आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहे, तो आप ये बताइए, विच इज द लॉन्गेस्ट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड? Equator, absolutely correct. Okay. An occurrence in astronomy in which three or more celestial bodies align themselves roughly in a straight line. दिख रहा है क्या आपको ये सब कुछ? हाँ, roughly in a straight line is called as, हाँ, सिजिगी, उसको सिजिगी बुलाएंगे। ओके। तो सोलर इक्लिप्स क्या रहता है, सिजिगी पे आकर करेगा। हाँ। एंड उसमें सन का विजिबिलिटी ब्लॉक हो जाता है अपने लिए। ओके। पेरिहीलियन क्या होता है फिर? हाँ, एफिलियन, करेक्ट, एफिलियन पेरिहीलियन। ओके। एफिलियन इज व्हेन द सन इज क्लोजेस्ट टू दी, sorry, farthest from the earth, and perihelion is when the sun is closest to the earth. Okay. स्टैंडर्ड डेज होते हैं उसके, अफिलियन का डे होता है 4 जुलाई, एंड पेरिहिलियन का डे होता है 3 जैन। ओके। दैट दोज आर द डेज। ऑल राइट। ब्लड मून, अभी अभी देखा हमने कि टोटल लूनर एक्लिप्स के टाइम पे आपको ब्लड मून दिखाई देता है अगर अर्थ का एंड मून के बीच का जो डिस्टेंस है वो एग्जैक्टली वेल मैनेज्ड होगा। तो ओके, ठीक है। एंड सिजिगी हमने ऑलरेडी कंसिडर किया। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वुड एक्सपीरियंस द फर्स्ट सनराइज ऑन अ गिवन डे? ऑकलैंड, ऑकलैंड, एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑकलैंड ये करेगा। सुवा जो है ना वो फिजी का कैपिटल है। ओके। सिडनी जो, यहीं पे देख लेते हैं, हमने यहाँ पे देखा था, राइट? वी आर सेइंग यहाँ पर कहीं तो फिजी है। ओके, फिजी इज ओवर हियर। ये आपको दिखाई दे रहा है क्या? कैन यू मेक आउट? वो ऊपर जापान है, यहाँ पे ऊपर जापान है, टोक्यो वाला। हाँ, ठीक है। फिर यहाँ पे वी से सिडनी, तो ऑस्ट्रेलिया। ओके, वी आर ओवर हियर सिडनी, एंड ये रहा ऑकलैंड। ओके, आपको ऑकलैंड यहाँ मिल जाएगा। सो वी आर सेइंग कि न्यूजीलैंड में जो ऑकलैंड, न्यूजीलैंड में वैसे भी टाइम थोड़ा आगे चलता है। ओके, ठीक है। एंड न्यूजीलैंड में अगर आप न्यूजीलैंड के मेनलैंड से भी और थोड़ा दूर जाएंगे ना, जो चादम आइलैंड्स नाम का एक आइलैंड्स का ग्रुप है, वो भी न्यूजीलैंड को बिलोंग करता है। वो तो न्यूजीलैंड के मेनलैंड से भी 45 मिनट्स आगे चलता है। ओके। सो इट इज क्लोजर, वो ज्यादा क्लोज है आईडीएल के। तो वहां पर आप यूजुअली फर्स्ट सनराइज एक्सपीरियंस करते हैं। ओके। तो ऑकलैंड विल गेट द फर्स्ट सनराइज। यू हैव टू नो दैट ऑकलैंड इन न्यूजीलैंड, सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया, टोक्यो इन जापान, एंड ये यहाँ पे सुवा आइलैंड्स में कहीं तो आपको, आई मीन फिजी में कहीं तो सुवा मिल जाएगा। ओके, दैट इज द थिंग। चलेगा। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। प्लैनेट्स है, उनके सैटेलाइट्स है, उसको मैच करके बताए। कौन सा वाला पक्का पता है? सैटर्न का तो पता है, सैटर्न का टाइटन है ना? तो वी वांट 3C, तो फर्स्ट एंड सेकंड कर सकते हैं। वेरी करेक्ट, एलिमिनेशन के हिसाब से देखिए 3C कर सकते हैं। ओके। अब वन के साथ ए हो सकता है या डी हो सकता है। मार्स का कैलिस्टो या फोबोस हो सकता है। मार्स के भी दो बहुत फेमस है, फोबोस। मार्स हैज टू बी फोबोस। सो वी गो विथ 1D। ओके, सो 1D 2A मिल जाएगा। 2A इज जुपिटर का कैलिस्टो है, एंड यूरेनस का मिरांडा है। ओके, दैट इज जुपिटर फॉर यू। वंस अगेन, मैंने ना सैटेलाइट्स को मैच करने वाला क्वेश्चन देखा नहीं है ना? लेकिन इसके पहले यूपीएससी वाज नॉट आस्किंग यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डेंसिटीज एंड मासेस एंड ऑल आल्सो। तो आई एम जस्ट थिंकिंग, जाने दो, नेक्स्ट वाला वो कहीं तो उन्होंने रखा होगा अपने। हाँ, करेक्ट, यू नेवर नो, राइट, विद यूपीएससी। ये वाला बताइए, समर सोल्स्टिस इन सदर्न हेमिस्फीयर कब अकर करता है? Absolutely. The sun is overhead the tropic of Capricorn. Okay. सोल्स्टिस उस टाइम को कहते हैं, समर सोल्स्टिस वो होता है जब सन आपके वाले ट्रॉपिक पे ओवरहेड है। ओके। तो अगर अब वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ओवरहेड है तो उसको समर सोल्स्टिस बुलाएंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अगर सदर्न हेमिस्फीयर में अगर वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे ओवरहेड है तो उसको समर सोल्स्टिस बुलाएंगे। ओके। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, अच्छा, नहीं, अपने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सोल्स्टिस विल बी व्हेन द सन इज इन द ऑपोजिट
हेमिस्फीयर। तो सन अगर दूसरे वाले टॉपिक पे होगा तो फिर अपना विंटर सोल्स्टिस, और हाँ उनका समर एंड अपना विंटर सोल्स्टिस। वेरी करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एक्लिप्स इज करेक्ट? लूनर एक्लिप्स दिन और रात दोनों में दिखाई देता है, लेकिन सोलर एक्लिप्स सिर्फ दिन में दिखाई देगा। ये तो रॉन्ग है ना? फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। सोलर एक्लिप्सेस रेयर होते हैं एंड 2 साल में एक बार आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। एक साल में 2 से 5 बार होते हैं। सो 2 साल में एक बार वगैरह नहीं होते। ओके। सोलर एंड लूनर एक्लिप्स, सी सी ऑप्शन सही है। वो विजिबल होता है स्पेसिफिक पार्ट्स में एट अ गिवन टाइम, है ना? इस टाइम पे ही होगा एंड स्पेसिफिक जगह पे होता है, दोनों सोलर एंड लूनर एक्लिप्स। ओके। एंड सोलर एक्लिप्स लंबा नहीं हो सकता देन अ लूनर, इट इज द अदर वे राउंड। लूनर इक्लिप्सेस लंबे होते हैं देन द सोलर इक्लिप्स। यू गेटिंग क्या क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं? एक ही टॉपिक पे वो घुमा घुमा के फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ के आपको पूछते हैं। ओके, दैट इज हाउ दिस वर्क्स। ये वाला देखिए, लोकल टाइम इन अरुणाचल प्रदेश इज 2 hours ahead of गुजरात। इज दैट करेक्ट? यस, दैट इज करेक्ट। ओके। एंड इंडिया अपना स्टैंडर्ड टाइम जोन नेपाल के साथ शेयर करता है? नहीं करता। नहीं करता। नेपाल हमसे 15 मिनट आगे चलता है। आई शो यू हाउ दिस वर्क्स। हाँ 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 हाँ। हमारा अगर 530 आवर्स है तो उनका 545 आवर्स है। दैट इज हाउ दे वर्क। ओके। सो वी आर सेइंग इंडिया जो है ना, वो ओ, आपको नहीं दिख रहा है? इंडिया श्रीलंका के साथ करता है। आई एम वेटिंग फॉर दैट वर्ल्ड मैप टू मैनिफेस्ट ऑन दिस। इंडिया जो होता है वो अपना टाइम जोन जो होता है वो श्रीलंका के साथ शेयर करता है। बांग्लादेश एंड भूटान एक टाइम जोन पे है। ओके। एंड सो फॉर एग्जांपल इंडिया में अभी क्या टाइम हो रहा है? लेट्स से 2:30 हो रहा है। ओके, इंडिया में। सो करेक्ट सी, बट आई मेंट द एग्जैक्ट टाइम। सो 2:30 हो रहा है अगर इंडिया में। ओके। तो नेपाल में 2:45 हो रहा होगा। ओके। एंड बांग्लादेश एंड भूटान में 3 o'clock हो रहा है। ओके, 3 PM हो रहा है। ऑलराइट। पाकिस्तान विल बी टू ओ क्लॉक हो रहा होगा। हमसे आधा घंटा पीछे चलते हैं। अफगानिस्तान उससे भी आधा घंटा पीछे। सो वहां पे दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। ओके, दैट इज हाउ टाइम इज, दैट इज हाउ द टाइम गोज। एंड श्रीलंका एंड इंडिया विल बी ऑन द सेम टाइम। ओके। सो श्रीलंका एंड इंडिया दोनों में अपना वही एक टाइम हो रहा है। ऑलराइट। ठीक है। विच इज द लीस्ट डेंस प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? Saturn, absolutely. Saturn is the least dense planet in the solar system. वर्नल इक्विनॉक्स के बारे में क्या कहा जा सकता है? कि वो डिफरेंट डेट्स पे होता है इन नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। इट अकर्स व्हेन द सन इज ओवरहेड द इक्वेटर। ये तो है। इक्विनॉक्स कब होता है? जब सन इक्वेटर पे आएगा। तो वो नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में डिफरेंट टाइम्स पे नहीं हो सकता है, वो एक ही दिन पे अकर करता है। ओके। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हो गया। इट इज ओवरहेड द इक्वेटर, ये सही है। एंड 21 जून को है सदर्न हेमिस्फीयर में। इक्विनॉक्स कब होता है? एक मार्च में और एक सितंबर में। ओके। तो ये 21 जून में नहीं है। सी, इक्विनॉक्स इज व्हेन द सन इज एग्जैक्टली ऑन द इक्वेटर। तो वो दोनों हेमिस्फीयर्स के लिए सेपरेट डेट्स नहीं हो सकते, है ना? सोल्स्टिसेस दोनों हेमिस्फीयर्स के लिए सेपरेट डेट्स हो सकते हैं, बट इक्विनॉक्स हैज टू बी द सेम फॉर द होल वर्ल्ड। ओके। तो पूरे दुनिया के लिए एक वर्नल इक्विनॉक्स जो होता है वो ये सितंबर में लाई करता है। व्हाट डू यू से, सॉरी, मार्च में लाई करता है। एंड देन जो ऑटमनल इक्विनॉक्स है दैट एक्चुअली हैपेंस ऑन 23rd September। ओके। सो एवरीवन एक्सपीरियंसेस दैट इक्विनॉक्स एवरीवेयर। So we'll just say only two is correct. Okay. Which of these planets are known to rotate in a direction opposite to that of the Earth? यूरेनस एंड वीनस। करेक्ट करेक्ट, यूरेनस एंड वीनस। ओके। एक का टिल्ट बहुत ज्यादा है, एक उल्टे डायरेक्शन में घूम रहा है। ओके। स्टैंडर्ड टाइम जोन क्या होता है किसी कंट्री का? वो जो यूनाइटेड नेशंस डिटरमिन करता है, वो कंट्री खुद डिटरमिन करता है, वो विच इज डिटरमिन बाय द कंट्री एंड उसके नेबर्स। नेबर्स से भी पूछना पड़ता है कौन सा लेना है कौन सा नहीं। एंड या फिर हम जो आसियान या फिर ईयू वगैरह जैसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो डिटरमिन करते हैं कि आपका स्टैंडर्ड टाइम क्या होगा। करेक्ट। सिर्फ वो कंट्री डिटरमिन करती है कि उसका कितने टाइम जोन्स होंगे एंड कौन सी वाली मेरिडियन को वो अपना स्टैंडर्ड टाइम मान के चलते हैं। ओके। दिस इज वेरी करेक्ट। इट इज डिसाइडेड बाय दैट कंट्री अलोन। नो अदर कंट्री गेट्स टू डिसाइड। ऑलराइट। ओके, ये वाला कौन से वाले प्लैनेट्स के बीच में एस्ट्रॉइड, मार्स एंड जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट फ्लाई करता है? ओके। ये वाला, लेंथ ऑफ द डे वेरीज ग्रेटली एज वन ट्रेवल्स फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स।
ऑन इक्विनॉक्स ये वाला सही है क्या कि जितना आप इक्वेटर टू पोल्स ट्रैवल करते हो लेंथ ऑफ द डे वेरी करता है. ऑन इक्विनॉक्स द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इज एग्जैक्टली द सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड. या या दैट इज करेक्ट. है ना, इक्विनॉक्स के दिन पे एग्जैक्टली 12 आवर्स ऑफ डे 12 आवर्स ऑफ नाइट होता है. तो वो एग्जैक्टली सेम होता है. कौन सा वाला लास्ट लाइफ स्टेज है सन का, अपने सन का? व्हाइट dwarf. Okay, it will be a white dwarf. Good. Last question. Which of the following capital cities are ahead of New Delhi with reference to local time? दिन में आगे चले गए हैं न्यू दिल्ली से. बीजिंग कहाँ है? चाइना में. तो वो डेफिनेटली हमसे आगे, क्योंकि वो ईस्ट को लाई करता है. इंडिया के ईस्ट में जो लाई करेगा वो सारे कंट्रीज इंडिया से आगे चलेंगे लोकल टाइम. अब ठीक. हम्म. प्रिटोरिया कहाँ मिलता है? साउथ अफ्रीका में. साउथ अफ्रीका हमारे पीछे है ना, क्लियरली, बिकॉज इट इज ओवर देयर. सो कैनबेरा इज इन ऑस्ट्रेलिया, तो वो आगे जाएगा. वॉशिंगटन डीसी नहीं, क्योंकि वॉशिंगटन डीसी हमारे बहुत पीछे है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है. ओके, सो वी आर गोइंग विद बीजिंग एंड कैनबेरा. ओके, 1 and 3. सो 1 and 3 के साथ जाएंगे. ऑलराइट, ठीक है. अभी गुड पीपल, थैंक यू वेरी मच. एंड